There are smiles all round in the Game on Hay studio tonight, yet again, so we can have a peaceful, quiet, sensible discussion about what was a fabulous game of cricket in the second part of the day, following on from actually another very close game earlier in the day as well. So welcome to the show. Just introduce our team yet again. It's still intact. Sanamir is here alongside me, Akib Javed, Sir Viv, Hazem Mahmood, Rashid, Latif and Umar Gul. And everyone, as I say, is smiling. So let's go that side of the room first and discuss it in the home language. राशिद भाई, आसिफ अली के बारे में आपने एक प्रेडिक्शन की थी। जी जी। एक आप और एक मदर अरशद जो हमारे स्टैटिस्टिशियन है, आप लोगों की बड़ी लगता है पाकिस्तान में दो ही लोग क्रिकेट समझते हैं। हमारे टाइम पे भी था। मतलब हम वापस चले हमारे टाइम पे भी था। नहीं, बहुत खुशी हुई। पाकिस्तान में दो क्रिकेटिंग जो है ना उनके पास तोते अच्छे। नहीं, खुशी हुई देख के आसिफ को। और ये जो सिचुएशन है ना, शूट करती है इसको। दुबई यूएई की जो है ना, बहुत ही, और जो ख़तरा था, जो मैं ख्याल था नबी थोड़ा मिस कैलकुलेट कर गए। स्पिनर अगर इनके पास होता शायद थोड़ा सा चेंज होता। ये यहाँ पे डीप आके और उसके बाद जो हिटिंग करते हैं 99% इनकी बाहर जाती है। मुबारक हो बाबर आजम को, पाकिस्तान पूरी टीम को और मैनेजमेंट को कि तीसरी लगातार जीत हुई है पाकिस्तान की। अजहर भाई, आपने जैसे कहा कि अफगानिस्तान पहले बैटिंग करना चाहेगा। हाँ जी। ये आपकी प्रेडिक्शन थी और हमने वही देखा, इवन दो कि ड्यू का फैक्टर आ सकता था, पर उन्होंने वही किया। नहीं, प्रेडिक्शन नहीं थी, मुझे यकीन था, क्योंकि अगर आप देखें उनकी जो है ना, वो बॉलिंग पे, अपनी बॉलिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। उनको ये पता है कि अगर हम 130 भी करेंगे तो वो गेम में हैं। आज जिस तरह बाबर आजम खेले, डेफिनेटली उनकी क्लास इनिंग्स थी, उसके साथ बीच में सब ने चिप इन किया। फ़खर के साथ उनकी जो पार्टनरशिप लगी वो बहुत ज़बरदस्त थी। और आई थिंक थोड़ा सा वहाँ पे, जैसे राशिद भाई ने कहा, मिस कैलकुलेट किया है कि राशिद खान को बहुत लेट लेके आए बॉलिंग करने के लिए। और एक जो वीक लिंक था, जो जन्नत जो था, वो वीक लिंक था। और जिस तरह की आसिफ अली ने हिटिंग की है, इसलिए हम हमेशा उसको बैक करते हैं कि उसमें इतनी एबिलिटी और स्किल है कि वो गेम को चेंज कर सकता है। हमने पिछले मैच में भी देखा, उन्होंने उस मैच में भी 2 छक्के मार के जो है ना गेम चेंज कर दी थी। और आज भी हमने देखा कि जिस तरह उन्होंने अपनी बैटिंग की है। तो आई थिंक कि ओवरऑल अगर मैं देखूं तो हम लोग जब हमने बॉलिंग भी की तो आई थिंक कि 17 ओवर तक जो है ना हमने कंट्रोल किया। जिस तरह अब हमारे बॉलरों ने स्टार्ट किया, 17 ओवर तक जो है ना हम गेम को कंट्रोल कर रहे थे। 2 ओवर बीच में ऐसे लगे जहाँ से थोड़ा सा हुआ कि हमें ऐसा लगा कि थोड़ा सा मैच उनकी फेवर में चला गया है। लेकिन जब हमारे बैट्समैन वापस आए और जिस तरह बाबर ने अपनी इनिंग्स खेली, आई थिंक सबको बहुत बहुत मुबारक। एक राशिद खान के बारे में एक और भी चीज़ जो मैंने समझी थी, उमर आपसे भी पूछूंगी, जो उनके इंटरव्यूज से साबित हुआ कि वो जब ड्यू पड़ती है वो कहते हैं मैं और भी अच्छी बॉलिंग करता हूँ। क्या इस तरह का जो स्पिनर होता है, जब वर्ल्ड क्लास होता है, क्या उसके इर्द गिर्द पूरी टीम की स्ट्रैटेजी बन सकती है? और क्या वहीं पे थोड़ा सा फॉल्टर, उसी वजह से क्या पता उनको थोड़ा लेट लेके आए हैं? क्योंकि उनके बारे में ये बात मैंने सुनी है, उनके खुद PSL में भी हम जब इंटरव्यूज़ वगैरह कर रहे थे कि वो कहते हैं मैं ड्यू में और भी बेहतर बॉलिंग करता हूँ। सबसे पहले तो मुबारक, बहुत ज़बरदस्त मैच जीते। बिल्कुल डेफिनेटली उसको जो कॉन्फिडेंस है। और अगर आप देखें तो अफ़गानिस्तान 3 बॉलर्स पे रिलाई कर रहा था, मुजीब पे और नबी और राशिद। ये तीनों ऐसे ना कि इन्होंने मेन टॉस जीत के फिर जब आप बोर्ड पर रन डालते हो और फिर जिस तरह उन्होंने कहा कि हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे, हमारी बॉलिंग में कैपेबिलिटी है और उनकी स्ट्रेंथ भी बॉलिंग है, तो मेरे ख्याल से उनके वो एक प्लान के तहत वो कर रहे हैं। क्योंकि अगर ऊपर से जल्दी राशिद को इंट्रोड्यूस करते तो मैं भी लेटर ऑन उनके पास कोई ऐसा बॉलर नहीं था कि जो रिस्ट्रिक्ट कर सके। मैंने ख़ास से प्री प्लान कर रहे थे, जिस तरह मुजीब ने स्टार्ट किया है, उसके साथ नबी आया, फिर अपने फास्ट बॉलर से बॉलिंग कराई और राशिद को रखा है 10 ओवर के बाद। तो मेरे ख्याल से उनकी स्ट्रेटजी और इसी हिसाब से वो लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे। There's a mixed discussion about whether Rashid came into attack a bit later, or could they have held a bit of overs for the spinners at the end. So there's that discussion, but yes, of course, everyone is really happy the way Asif Ali played, the way Babar Azam led the team. So overall consensus is that it's a very good win. It certainly is. Okay, if we just have a quick look at the match summary, just to remind you all the basic figures, the most important figures. A great partnership between Gulbuddin and Nabi of 71 gave Afghanistan that impetus towards the end of their innings. Generally good figures for Pakistan bowlers. There's top three there, all in the 20s. Ralph and Hassan Ali a little bit expensive, but
The target then 148. Babar Azam again very steady with that 51, just keeping things together. Obviously the star of the show at the end, Asif Ali, 25 not out from just 7 deliveries. So work it out. That is 4 scoring shots, which are all sixes, just a token single, and that was it. Job done. All the tension taken away. Pakistan keeping their record intact. Viv, I mean, it's echoes. I know it wasn't the last over of the game as such, but we got rid of that. There's echoes of Carlos Brathwaite. Remember the name. Well, it wasn't the final, really, but... No, but it's still... yeah. Don't worry. They can do it again. No, Yeah, it's yeah, not the final, but it's still 4-6. But it's leading up to that, you know. I think it was a good game for Pakistan today because of they've been tested. And this is what you need when you're going forward. You cannot afford to have easy matches all the time. You can actually say that it was pretty easy against India. They were tested in the very second match. Tonight they were even tested even more, and they came through. You need these sort of tough goings at times in order for you to pull through. And certainly Asif Ali, what he did, we didn't get 6 sixes in the over of such, but when you can do that, take whoever is at that particular end bowling, and you can take whoever down. 4 sixes in any over, in whatever style of cricket you're playing, is just a magnificent feat. And to bring Pakistan home, what a better way. Couldn't be a better way. Well, no, it was a spectacular finish, spectacular. Just going back to the question they were posing on the other side of the room about the spin, about Rashid Khan. I mean, I have a feeling that they had to get him in because they want to try and pile the pressure on to the end of the game. And you bowl your best bowlers first to try and get people out, which by and large works, not quite as spectacularly as it did against Scotland. But then you always have the potential for the weak link they mentioned. And poor old Karim Janat was the man who suffered in that 19th over. You know why they keep bringing Rashid after 10 overs? Because when you bring him early, the batsman will waste his over. He comes in a situation where at the same time you need 7, 8 and over. You're still trying to look for runs where Rashid become a very difficult bowler. The 3 bowlers prove again and again that they are the best in the business. It was a quite tense game going on until the 19th over. And that is what we have always been talking. Okay, you need 5 good bowlers. Nowadays people target you and wait for the situation, wait for a bowler, they pick a bowler and took advantage. And that's why Pakistan played smartly. Babar Azam's shot was a bit Not so smart. Not so smart. He could have take one and then give it to Shoaib, and then the confidence which now what's his name? Asif Ali. The guy. The guy. I mean, gave this team so much confidence that they can work around each other, build a partnership, and leave it some tail into Asif, and he will finished it off. And there's still batting to come as well. Yes. I mean, that's the great thing about having a side with a long batting lineup and a man in that position. Guy number 7. The guy number 7 there with the big shots just takes the pressure off. Right, Hassan Ali can bat. Yeah. Well, Imad Wasim was there. Imad. So the only thing that's why all-rounders and genuine all-rounders and bowling are all-rounders, because if you have more batting all-rounders, you'll have a very weak bowling attack. The indication is if you have bowling all-rounders who can bat, that's the strength of a team. I think, like you mentioned, after 10th over, they bring back Rashid Khan. I think because I thought they miscalculate, because Mujib bowled 4 up front, like 8 overs. He bowled 4 up front. So if you have a weak link, then you have to bring back your weaker bowler after 6th over and use them and keep 1 over for Mujib in the middle period. नहीं, इसमें क्या है, न्यू बॉल का सारा इशू होता है. 6 ओवर में आप गुलबदीन को करा सकते थे. यहाँ पे गुलबदीन और नवीन करते तो 3 ओवर या 4 ओवर ये कर सकते थे. पहला, तीसरा, 5वां, 7वां मुजीब ने किया. 11वां, 13वां, 15वां, 17वां राशिद खान ने किया. दोनों ने एक साथ बॉलिंग नहीं की. ये प्रेशर बिल्ड करके दोनों एक साथ आते तो क्लच कर सकते थे. 4 ओवर ये एक साथ करते तो रिजल्ट डिफरेंट होता है. ये मेरी सोच है. तो शायद नबी कहीं ना कहीं
मिसकैलकुलेट कर गया पाकिस्तान की क्योंकि आखिरी 3 ओवर लास्ट 3 ओवर बेसिस के ऊपर आप 40 रन नहीं बचा सकते लास्ट 3 ओवर ये नहीं बचा सकते। क्या ऐसा हो सकता है कि स्पिनर्स क्योंकि थे और एक तरफ शॉर्टर बाउंड्री थी तो वो आसिफ को बाउंड्री प्रॉब्लम होती है स्पिनर्स के साथ, लेकिन वो एक साइड से क्योंकि छोटी बाउंड्री थी इस वजह से दोनों को इकट्ठे नहीं लगाया क्योंकि एक स्पिनर को फिर छोटी बाउंड्री से बॉल करना पड़ता। हो सकता है लेकिन ये कि इन्होंने एक एंड को रखा था कि एक हमारा मेन बॉलर जो है वो बॉल करेगा, इसीलिए 8 ओवर तक करते रहे। उसके बाद 1 ओवर का गैप आया, 9 ओवर किसी और ने किया, नवीन ने किया शायद, उसके बाद 11 से 17 ओवर तक देखें राशिद खान आया है। तो इन्होंने गेम को ऊपर लेके गए, आउट करने कहीं नहीं गए। ये जितना वहाँ डीप जाएंगे मैच में पाकिस्तान स्ट्रांग हो जाएगा, और पाकिस्तान स्ट्रांग जब होगा तो फिर आसिफ नीचे और भी बैटिंग थी, 1 ओवर बाकी रह गया, नो डाउट 4 छक्के उन्होंने मारे, लेकिन यहाँ से सीखना चाहिए कि इनको एक आकिब ने भी बात की थी, अजहर ने भी, कि इनको फास्ट बॉलर चाहिए जो कि लास्ट ओवर्स कर सके। यहाँ पे थोड़ा सा मिसकैलकुलेट हुआ है अफगानिस्तान से। आई थिंक इसमें यही है ना कि सम टाइम वो जो कहते हैं ना कि आपको प्लान ए के साथ प्लान बी भी होना चाहिए। मेरे ख्याल से वो प्लान ए के साथ आए हुए थे, और उस टाइम पे जब अगर कैप्टन को पता चले कि मेरा जो मैन बॉलर मुजीब, उसको जो ना वो लोग आराम से उसके ओवर सर्वाइव कर रहे हैं और उसको उसके ओवर सिर्फ ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसको स्मार्ट होना चाहिए था कि वहाँ पे प्लान बी कर रहे थे। वो इंट्रोड्यूस कर सकते थे राशिद को अर्ली ऑन, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि उसको 10 ओवर के बाद, और राशिद भी कह रहे हैं कि मैं अगर बॉल ड्यू भी पड़ जाए तो मैं उसके साथ कंफर्टेबल हूँ, लेकिन बीइंग अ कैप्टन आपको स्मार्ट होना पड़ता है, आपको प्लान बी के साथ भी सम टाइम आना पड़ता है। ये नहीं कि आप प्लान ए के साथ आए और आप उसी को कंटिन्यू करो। मेरे ख्याल से प्लान बी आपका होना चाहिए, इसलिए जो स्मार्ट कैप्टन होते हैं वो चेंजेस भी उसी हिसाब से करते हैं मैच के सिचुएशन से। So, Rashid bhai had a point that because they don't have a genuine fast bowler who can bowl at depth, so they had to bowl Mujib at the top in the power play, and then Rashid and Mujib couldn't bowl together and couldn't have that kind of a bowling partnership that could really crunch and put pressure on and the say opposition. 1 over of Mujib in the middle or in the end. Always tough, always tough. Okay, if you just have a look at the points table then, there's pretty much, shall we say, 100% certainty that Pakistan will get through to semi-finals. I can't see things going amiss against Scotland and Namibia. That would be a story. And I'd like to hear that discussed in the studio. I don't want that story. I don't want to hear that story. You're right, absolutely right. So they've done everything right so far. Obviously, it leaves the rest of the group. The other qualification place is up for grabs. India obviously want to get up there. New Zealand want to try. Afghanistan aren't out of it. But Pakistan, this is why we're all smiling, looking very nice. Pakistan safely through. What I want to ask you about is at the start of that game today, when the opening over, Shaheen Shah Afridi came in steaming in. It looked as though there was about 3 million gallons of adrenaline pumping through everyone. I mean, it was frenetic, almost too excitable. Yeah, he wasn't calm. He lost that calmness. His body was tired. He wanted to bowl at 180 kilometers. So he was a little bit all over the place. You need to control your emotions. Somebody should talk to him tonight. Okay, hello, when you're going into the ground, slow start, have energy, but in control. Because when you just imagine you're playing in the semis or maybe in the finals, you got to be calm and let your body move with the rhythm. So even though with Haris, he was trying too much. I mean, because now they wanted to bowl as fast as possible, but it's only 2-3 kilometers low and slow. But the area where you're hitting, the area is important and channel is important. You're 100% right. If you see the first over of Shaheen Shah Afridi and the last over, he was running slower. The first over, definitely against these guys, because what rivalry than India at the moment. Is it? Yes. Oh. I think And I can see the hate Afghanistan also cancelled the tour. I mean, they were to tour Pakistan. आके भाई मैं आपके साथ एग्री कर रहा हूँ क्योंकि Extra एक तो उसके motivation. जो पास में जो एक एक्सपीरियंस है उसके साथ जो 19 के वर्ल्ड कप में था जाजी के साथ और बाकी जो अफगानी जो प्लेयर्स थे उनके साथ, इसका रीज़न ये है ना कि ये सारे जो ना रहते हैं एक जगह पे पेशावर में, और जो अपना शाहीन है जहाँ पे रहता है लिंडी कोतल में, तो बिल्कुल बॉर्डर के साथ है,
تو یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ, تو وہ آپس میں جب ملتے ہوئے ان کی فیملی وغیرہ نا, تو وہ کافی سارے پھر ایک دوسرے کو ٹیز کرتے ہیں. تو ایک تو ہی ہیڈ اے بیڈ ایکسپیرینس ان 2019, اور پلس یہ کہ وہ کافی وہاں پہ باتیں اکیڈمی میں ساتھ پریکٹس کرتے ہیں, تو اس لیے اس نے ایکسٹرا پریکٹس اپنا ایفرٹ کرنے کی کوشش کی, جس کی وجہ سے وہ جو اس کا سوئنگ تھا اور زیادہ ایگریشن کے ساتھ وہ کر رہا تھا. Most of the teams we are playing, they have to play just more than a little bit more. They have reason to play and reason to beat teams. But the point in the end is this: you need so much emotion and so much control, which is exactly like this studio, isn't it? Yeah. If the emotion gets too high, things go slightly wrong. If the control is high, we're good. The control has been good. We're good. Okay, now that we're good, let's take a break. We'll be right back with you for more Game on Hay. Well, welcome back to Game on Hay. We are still discussing yet another good day for Pakistan, their third successive win in this tournament as they saw off local rivals, Afghanistan. Fabulous game, a great finish, but also some very fighting spirit from Afghanistan. Now, if we talk about their innings, Sana, there was a sort of slight suspicion, we can put it to these High Court judges, that there was a certain amount of batting without due care and attention, or certain recklessness in the early approach from Afghanistan, which left them, what was it, something like 70-odd for 6 in about the 13th over, followed by a recovery. So let's put it to the judges what they felt about that innings. اوورآل افغانستان کی بیٹنگ اننگس کے بارے میں ہم اگر بات کریں تو سارے رنز نیچے سے بنے ہیں, 7ویں 8ویں وکٹ پہ جا کے 20, 35 اور 35. اوپر کی جو اوورآل اپروچ تھی اس کے بارے میں کیا کہیں گے ان کی بیٹنگ؟ آئی تھنک پاکستان نے جو بالنگ جس طرح کی بالنگ کی ہے وہ بالنگ بہت زبردست کی ہے. انہوں نے آؤٹ پلے کیا ان کے ٹاپ بیٹسمینوں کو. اگر آپ دیکھیں کہ ایکسٹرا پیس آف شہین شاہ افریدی نے جو ہے نا اس کو شہزاد کو ہٹ کرنے نہیں دیا, اینڈ دین اماد واز ویری اسپیشل, جو اس نے اس کو رضائی کو بال کیا کہ ایئر میں اس کا بال باہر گیا, وہ کراس دا لائن کھیلنے گیا تو ٹاپ ایج ہوا تو اس میں وہ آؤٹ ہوا ہے. اور پھر حسن علی آئے پہلے بال پہ ہارڈ لینتھ پہ بال کیا, تو اٹس ناٹ ایزی ان دس وکٹوں پہ کہ جو اوپر سے آپ کو ہٹ لگ جائے. آئی تھنک کہ اوور آل پاکستان کی بالنگ اس وقت بہت اچھی تھی. اینڈ دین تھوڑا سا پینک ہم ہوئے جب 76 for 6 تھے, اس کے بعد پارٹنرشپ لگی, اینڈ آئی تھنک کروشل ٹائم جو تھا وہ لاسٹ 2 اوور جو ہے نا 18واں 19واں اوور جو تھا اس میں ہمیں رنز ہوئے. اس میں ہم نے تھوڑی سی پلان کے ساتھ بالنگ نہیں کی. آئی تھنک ہم نے ان کی آنکھ میں بالنگ کی ہے. اگر ہم ان کو تھوڑا سا وائڈ بالنگ کرتے, نبی کا سب کو پتہ ہے کہ وہ جو ہے نا اس کی آنکھ اس طرف ہے اور گلبدین کی بھی آنکھ اس طرف ہے, تو تھوڑا سا آئی تھنک کہ وہ سلو ون کیے لیکن منہ میں کیے, ان ٹو دا پچ والے سلو ون نہیں تھے کہ اس کو جو ہے نا کھیلتے. آئی تھنک کہ وہاں پہ تھوڑا تھا, لیکن یہ اچھا ہو گیا کہ ایسی سچویشن ابھی اس میچ میں ہو گئی ہے تاکہ آگے جا کے ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی اگر ہم اس پہ اپنا ورک کرتے ہیں. آئی تھنک اوور آل اگر ہم دیکھیں ہماری فیلڈنگ واز ویری ویری گڈ, مطلب سارے لوگ جو ہے نا وی ول لک اے گڈ یونٹ, تو آئی تھنک کہ دیٹس وائی 76 for 6. میں اسی پہ آنے والی تھی کہ 5 کیچز آج بھی پکڑے ہیں ہم لوگوں نے, اور اچھے, کوئی اتنے ایزی کیچز بھی نہیں تھے. پہلا افغانستان نے چھوڑے نا, افغانستان نے کیچز چھوڑے. پہلا کیچ جو حارث رؤف نے پکڑا وہ بھی اتنا ایزی کیچ نہیں تھا. اگر دیکھتے ہیں نا ہماری اننگ میں بالنگ کو دیکھیں, دوبارہ آئے ہیں اماد وسیم سرکل کے اندر 6 اوور کے اندر. پچھلے دنوں جب اظہر نے بھی بات کی تھی, عاقب نے بھی, کہ ہم نے ٹرائی کیا حارث کو 6 اوور کے اندر, جو کہ غلط فیصلہ تھا. وہ پرانی مینجمنٹ کی سوچ تھی کہ ہم اماد کو باہر کر دیتے ہیں, اماد کو ہم نے باہر کر دیا. اور پاکستان جب نمبر 1 رہی تھی تو اماد وہ بالر تھا جو سرکل میں 2 سے 3 اوور کیا کرتا تھا. اس کی ریشو دیکھیں, اس کی بالنگ دیکھیں, وہ دوبارہ سے نیو بال کر رہا ہے. جیسے عاقب نے بھی مینشن کیا تھا کہ پاکستان کا جو اٹیک ہے اس میں بہت ہی سپورٹیو ہے یہ پوری ٹیم کے لیے. لیفٹ ہینڈر کے لیے تو بہت ہی زیادہ ہے. جس طرح سے آج بالنگ کی, 4-5 ڈاٹ بال کھلائی, پھر اس کو مارنے پڑ گئی, اور کیچ جو پکڑا جس کا آپ بتا رہی ہیں. تو یہاں پہ اماد وسیم کا واپس ٹیم کے اندر آنا, کیونکہ ڈراپ دوں میں ہے پاکستان ٹیم سے یہ, کیونکہ فوقیت دی گئی تھی لیفٹ ہینڈ اسپنر کو, نواز کو دی گئی تھی, وہ بھی اچھے پلیئر ہیں. لیکن جب آپ بڑے میچ میں آتے ہیں تو اس میں اماد وسیم کا پھر اب کیا آرڈر اچھا بن گیا. اماد وسیم نیا بال کریں گے, ساتھ میں شاہین کریں گے, بیچ میں دوسرے بالر ہیں, آخر میں بیچ آ جاتے ہیں آپ کے ٹاپ بالرز جو ڈیتھ اوور کے ہیں. حارث رؤف آ گئے یا شاہین کے آخر کے 1-2 اوور, کپتان کو فلیکسیبلٹی مل جاتی ہے. تو کیا جو چیز چاہتے ہیں آپ آرڈر میں, یہ چیز ہونی چاہیے آپ کے ون ڈے میں یا اس کے اندر T20 میں, وہ چیز ہو رہی ہے. ایک چیز ہمیں جو ہمارے خلاف جا رہی ہے 3 میچ جیتنے پہ, کہ ہم نے کسی میں بھی پہلی بیٹنگ نہیں کی ہے.
वो बहुत देखने वाले। नॉकआउट में स्कॉटलैंड अब कहेगा कि हमारे अगेंस्ट दो मैच में वहाँ पहले बैटिंग करनी चाहिए और हमें हैदर अली को भी बीच में ट्राई करना चाहिए अगले मैचेस में। एक चीज़ मैं इसमें कहूँगा, इमाद की बात कर रहे थे तो अब देखें पहले भी जब टीम नंबर 1 हुई थी तो वो 10 ओवर में 11 ओवर तक अपने स्पेल ख़त्म कर लेते, लेकिन जो अच्छी चीज़ है, गुड साइन फॉर पाकिस्तान के इमाद का, अगर आप देखें कि पावर प्ले में जो उन्होंने बॉलिंग की है उनका 95 kph उनकी स्पीड थी, लेकिन दायरे के बाद जब उन्होंने बॉलिंग की है तो उनकी एवरेज स्पीड जो है ना 85 थी, तो उन्होंने बॉल को स्लो किया है, अपनी वेरिएशन को यूज़ किया है और यूटिलाइज किया कि पिच को और ग्राउंड की डायमेंशन को। वेल डन। बहुत बहुत अच्छी इनकी इम्प्रूवमेंट हमने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी देखी है कि पेस तो अदर के बराबर ही है। नहीं, मैं अभी भी 136 करता हूं, अभी भी 136 करता हूं। Rashid bhai is saying that Imad, the way he bowls with the new ball, it's as close to the pace of Azhar Mahmood now. That's not kind. It might be true now, but yeah. No. I can still bet. 40 plus. All right, next year. Yeah. Can I ask you, I was going to say, was I the only person, maybe Viv is alongside me here, that was disappointed to see Zazai out so quickly as a neutral, as a man coming here to enjoy the cricket of both teams, because obviously he was a danger man, potential danger man, and the shot he played was one that he plays all the time, normally more successfully, but just for me that moment was a disappointment because I was quite looking forward to that contest. Yeah, I mean there are two openers, they can damage any team in first 6-7 overs, Shahzad and Zazai. If you have to pick a bowler. Imad is a very smart bowler. He actually swings the ball in the air and then it's drift more. So going across with a new ball against Imad is not a good idea. You can hit him mid-on, covers, straight. That could have been different story. But against quality bowlers, they have strengths and they have area where you can manage them. So it wasn't a good shot against Imad Wasim. I mean, with Imad, you'd almost go the other way. Yeah. If you have that shot in your locker, you can go over extra cover. He can. He played that shot as well. So I think wrong selection of shot. And I think the captaincy from Babar, that was also good. He put the slip in for Imad. Generally for spinners and such attacking batters, we don't see that. And that definitely puts a bit of doubt in the batter's mind also. Just having that extra fielder there, that if I miss it, there can be a net. So good pressure tactic. Yeah, and he picked up the wickets. I mean, this is always the key. When you got a side 76 for 6 in 13, you're already... you feel in command of the game. Now I know it went away a little bit after that. If we look at the comparison, what we call the worms of these two teams as they progressed through their 19-20 overs. I mean, for that up until 10, if you look at this now, up until 10, it was basically Afghanistan who had the brisker progress, but they lost wickets. And at that same time, you had Babar Azam, Fakhar Zaman just playing properly, just piling on runs at the right sort of pace, and then the worms changed sizes. It was only at the end you had that sort of last 2 overs where the pressure is suddenly on, although of course Asif Ali made it look as though there was absolutely no pressure because it's 24 and over rather settles a game, doesn't it? Yeah, I think what Afghanistan did well was the run rate. They kept the run rate up, but they kept losing wickets, and that's why I think they couldn't reach the target that they might have had in mind when they wanted to bat first. Yeah, well, if you have a look at the Pakistan innings, the Afghanistan innings, and look at the card, it tells the story. When you've got 0, 8, 10, 10, 15, 22, it's not quite what you want. You want one of those top 3 or 4 to be making 50, 60, keeping things together. But that partnership between Nabi and Gulbadin, 71 in good time, rescued the show. Well, I know for sure Nabi used to bat a little earlier. Yeah. But for some reason, I don't know whether he believes that batting low in the order gives him that sort of license for him to do what he would have done tonight with Gulbadin. I think it was a magnificent comeback. Got themselves into a position that basically they felt, and I think they felt it as well, that they were able to contain Pakistan a little bit more. But as you would have said earlier in connection, you need another good quick. They didn't have that today. Yeah. Because as you can see, Asif Ali took down that particular individual
quite easily. And as you would have said earlier, it wasn't So Carlos that Brathwaite. guy took down that individual. So it's like a sort of MI6, like a Secret Service discussion about. We're trying to keep the names. We're trying not to embarrass anyone here. It's called matchups, you know, like it's a great matchup between ASIF and Matchups between one bloke we don't know who he is against another bloke who we don't know who he But I is. think we have a fair idea who it is, don't we? Yeah, we replay the tapes actually. Yes, Yeah, let's do it. This guy and that guy. And then let's see who was there. I'd like to see the notes, so the pre-match notes. Rashid, maybe we can write down some notes. That guy, his strengths. This guy, his other strengths. The other bloke, something Tomorrow else. morning. Or what's his name Done. again? Done. And what's his name? Again. Who should be? Likewise, if you look at the Pakistan bowling figures, I mean, there's a story that is told by figures quite often, and you can tell again, spinners, as Akim has said so often, good spinners do a really, really good service. And all right, towards the end there with Hassan Ali, very expensive. Even Haris Rauf, who we were praising very highly the other day, was expensive in his last over as well. It's happened sometime when you got success, 4 wickets, you just go for wickets, and sometime you forgot that how important dot balls are. You will get 4 wickets, and you didn't plan for 4 wickets, isn't it? No. What you need to do is bowl a dot ball, a good ball, your good ball, and then wickets will come out automatically. He was like not as accurate as yesterday or against India the way he bowled. He was more of lot of excitement within him and Shaheen. आखिर इसमें जो देखा है ना कि जो बॉल की है दोनों ने, वो नबी है, नबी को इसका शॉर्ट ऑफ लेंथ अगर यहाँ की जाए तो उसको स्ट्रगल करता है, लेकिन गुलबदीन वो डिफरेंट प्लेयर है, वो बैकफुट पे रहता है और यहाँ पे वो चांस लेता है, कट और पुल पे ज़्यादा रहता है, शायद यहाँ पे थोड़े से ट्रिक मिस कर गए। यॉर्कर नहीं मारे, नबी को सामने बॉल की जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है इस एरिया में। देखो ना कोई भी शाहीन क्यों सक्सेसफुल हुआ, why Shaheen bowled a good last over, because he was bowling Yorkers into the feet. So Haris Rauf missed out the trick because he didn't bowl the Yorkers. Because he got success in the last game bowling a lot of slow balls. Yeah. So today he didn't get the slow balls. Because sometimes people are ready for it. Yeah, he was ready for that slow one. You need to bowl a Yorker. But like Hassan Ali, if you see Hassan Ali's stats today, for example, he bowled 4 overs, bowled 12 dot balls. But he gave the boundary balls as well, like down the leg side early on when he got a wicket, and next ball we see down the leg side easy. अदर एक चीज़ आपने बहुत काम किया अदर अली के साथ, उसके साथ हसन अली के साथ, हर मैच में हम 9 बॉल देख रहे हैं उसकी, जो कि कॉस्ट भी हो सकती है, लेकिन आज उन्होंने 9 बॉल की, लेकिन यॉर्कर में बच गए। वो क्या वजह हो सकती है कि आपने बहुत क्लोजली उनके साथ काम किया है? देखिए हसन अली नॉर्मली अगर आप उसको देखें ना, उसका रनअप बड़ा अच्छा होता है, वो ओवर स्टेप नहीं करता। हसन अली जो है ना, वो उसका हील लगता है, बिहाइंड रहता है, उसका तकरीबन 2-3 इंच का मार्जिन हमेशा रहता है। आज अगर हम देखें कि उसने यॉर्कर भी जो करने की कोशिश की है, वो यॉर्कर भी नहीं थे, वो हाफ वॉली हुए। तो आई थिंक मुझे जो लगता है उसको देख के, मैंने उसकी वीडियो भी बनाई है, मुझे लगता है कि उसका रिदम जो है ना वो उस तरह का नहीं था जिस तरह वो फील करता है, तो उसकी वजह से उसके यॉर्कर भी मिस हो रहे थे और नो बॉल भी पाँव भी आगे जा रहा था। What I think saw as well with ASIF Ali, when he bowled that no ball, the way in which he came back after that to me was huge. Because everyone was looking, it's a free hit, I'm going to take him down wherever. But I think ASIF Ali did magnificently well. That Yorker. Hassan Ali, sorry. Yeah, if Asif Ali was bowled that ball as well, he's had a very good day. Okay. Bat and ball. I mean, this is what we see more often. A bowler bowls the no ball, and the next ball he concentrate more. He try to bowl his best ball. So I think why can't they? It's only 24. Why can't they only focus on bowling their best ball? It's a very good point. It's on that alone, it's not about 14 overs or 20 overs. It's only 24 ball. So you're not bowling a 4 over spell either. So you bowl 12 balls and then 12. Why can't you bowl? हारिस रऊफ ने 5 ओवर जो किया, सारी बॉल वो पीछे से करता है। वो क्या रीजन है? क्योंकि आपके टीम में खेलते हैं वो आगे जाते ही नहीं है। उसका वही है जो आमिर का है। अच्छा, आमिर जब शुरू में आया था तो his foot, if that is a line, stays here, that behind.
So I tried to work out. I said, why can't you go there? You will get a bit more, pace and bounce. It'll be that much Not quicker. there. It'll be that much quicker. Viv, hang on, Viv. Is that much quicker going to worry you? I mean, he's already quick. But And he doesn't have to worry. And he doesn't have to worry when about his he front foot. was young. Okay. Yeah. So I tried. How old is he now? Who knows? No, no. Amir or Rauf? Rough. With Amir. Yeah, And same thing with Rouse. If you try to do something with them, and then they ended up with the Lord Test match. I think you can't. If you go another 6 inch, he won't. You can't see. He can increase pace in But that. they're it's- I lucky. think They're it's- lucky. They it's a will good. never. They can't bowl no balls. जी उमर आप क्या कहते हैं I love more than anything else is energy. Umar bhai, hum Yeah, sure. Even in the field, Like- and especially with ball in hand, there's always this purpose. Like he believes he can get a wicket with almost every delivery. Yeah. Nice to have him. Right, shall we have a look at the... Oh, sorry, Umar, do you have a point to make? या अजहर भाई और आकिब भाई जो आप बात कर रहे हैं ना कि वो क्रीज से पीछे कर रहा है, आई डोंट थिंक सो कि उससे उसके पेस पे असर पड़ेगा, क्योंकि जो पेस है ना वो तो आपके रिलीजिंग पॉइंट होता है ना, जहाँ से रिलीज को बाउंस का पड़ जाता है। जहाँ से आप लाइन से अगर आप पीछे से करो या नो बॉल करो, आपका जो रिलीजिंग पॉइंट है पेस आपका वो आता है। इसमें सिर्फ डिफरेंट ये आता है ना कि बैट्समैन को टाइम कम मिलेगा, लेंथ का फर्क आता है, लेंथ का फर्क आता है। अभी याद देखो ना कि पेस का फर्क, पेस फॉर द स्टार्टिंग पॉइंट, यस, okay, that is different. When you release, that is the maximum pace. As it goes, bounce and reaches to the batsman. If you start from 90 here, batsman will receive like 71, 72. Yeah. So if the distance is shorter, the batsman will have more speed when it reaches the batsman. टाइम का भी वो बैट्समैन के टाइम में भी So फर्क पड़ेगा। that's what speed does. Hurry you up. I think Rashid bhai, So I think it's not a big deal. I think they're lucky. I mean, Haris Rao is lucky because he's doing well. he doesn't have a doubt bowling a no ball. Exactly. So that's good. I'm comfortable. So I'm he's happy. never going to have to bowl for a free hit, is he? So that's great news. Shall we have a look at the fall of wickets for Afghanistan? Yes, Would you like please. to put it to the panel, the High Court judges? उमर भाई आप फॉल ऑफ विकेट्स को जरा देखें अफगानिस्तान की और एक्सप्लेन करें। अच्छा, Bowling इस भी। समय जो ना जो मैंने जो नोट किया ना अफगानिस्तान की बैटिंग में, एक तो उनकी दोनों साइड से ना जो एक्स्ट्रा इमोशन बहुत ज़्यादा थे। अफगानिस्तान के बैट्समैन ने जो ना स्मार्ट क्रिकेट नहीं खेली कि अब ये देखें ना, वो हर बॉल पे जो ना आप जा रहे थे बैट्समैन को मारने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आप देखें कि दूसरी साइड पे बॉलर क्या बॉल कर रहे हैं। अगर अच्छा बॉल कर रहे हैं तो आपको रिस्पेक्ट देनी है और आपको स्मार्ट क्रिकेट खेलनी होगी। सिर्फ ये नहीं है कि आप हर बॉल पे हिट मारें, सिंगल डबल भी। इस वजह से अगर आप देखें ना तो उनको स्टार्ट अच्छा मिला था, 49 for 4 थे पावर प्ले में, लेकिन जिस तरह फिर हमारे बॉलर्स ने कम बैक किया, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने बॉल किया, और फिर एंड में जिस तरह स्मार्ट क्रिकेट गुलबदीन ने और नबी ने खेली है ना कि उनको एक अच्छी पोजीशन पे लेके आए 147, तो उन्होंने कदर बेहतर स्मार्ट क्रिकेट के लिए जो उनके टॉप ऑर्डर के बैट्समैन थे। राशिद भाई आप कुछ बताएंगे इनकी शॉट सिलेक्शन? नहीं, शॉट देखिए इनका मोमेंटम जारी रखा, 6 ओवर में 49 रन किए, ये बड़ा की पॉइंट है इनकी क्रिकेट खेलने का। इनका तरीका वही है। थोड़ी सी देखें अच्छी टीम के खिलाफ ये खेलते कम है, एसोसिएट मेंबर के खिलाफ खेलते हैं, जिसकी वजह से पावर प्ले में जो हल्की टीम आती है एसोसिएट की, उसमें आप देख लें इनकी बैटिंग दजाई की देख लें, और ये बहुत अच्छा कैच किया है, ये बहुत अच्छी बॉल थी, प्लान करके उन्होंने गूगली की। इससे पहले चौका या छक्का मार चुके थे ये रदरान, और टीम इनकी अभी थोड़ा सा मैं समझता हूँ एक फास्ट बॉल की ज़रूरत है, और पावर प्ले को किस तरह से मैनेज करना है, खेलना है। नो डाउट इनकी विकेट गिर गई, लेकिन अगर 40 रन बनाए, 1 या 2 आउट होंगे तो फ्यूचर में ये टीम और मुझे लगता है कि in this World Cup they will surprise one or two big teams. They almost surprised us, almost. Isn't it? Well, it was close. That's, And Especially for the sake of one New over or so. Zealand. And how do you think about what do you think अमेरिका about को भी किया है Shadab's bowling? I mean, he's quietly giving those, अमेरिका को भी सरप्राइज किया है। providing those dot balls in the bowling department. He has been really good Yeah, in I mean, Pakistan again, in that googly. 4 overs, no maidens, 1 for 22. You'd take that any day in T20, wouldn't you? And I you've guess got- there were folks speaking yeah. about him basically not being in form. But for some reason, the guy, he came today and he does his stuff. And that googly that he bowled, that was a magnificent ball, man.
Absolutely, absolutely. So it's the one that got Janat, yeah? Yeah, that was a yeah. magnificent delivery. Yeah. As you can see, the guy didn't pick that well. He bowled really well against India as well. Definitely give him a lot of confidence moving forward. I think he's a class act. Absolutely. There are times where he's a little off form, but when he gets it right, man, he's tough to handle. Okay, on that note, क्या hold वजह those हो thoughts. सकती है One more thought. Take that thought. Go on. अगर ये बताओ कि अभी आउट ऑफ फॉर्म You're थे, talking about सोशल control. मीडिया पे देखें, हर जगह देखें, आसिफ अली और शादाब दो ऐसे प्लेयर थे, हारिस रऊफ भी, जिसको बैश किया गया मीडिया में, और आप लोगों ने सपोर्ट की, कुछ और लोगों ने सपोर्ट की. क्या वजह है कि एक महीने के अंदर चेंज हो गया सब कुछ? Good question. I think we'll come back to that answer after the break. The answer is going to be long. Fine. Tell me the question later. We'll take a break right now. We've had pretty good discussion so far, under full control, and we'll have lots more coming up after the break. Welcome back to Game on Hay. Now, we've adopted, you might have noticed at the end of the last segment, we adopted what was known as a bit of a cliffhanger, a sort of soap opera tactic, leaving you hanging, waiting for the biggest question we're going to hear all night. Sana. तो राशिद लतीफ साहब का क्वेश्चन था कि दो प्लेयर्स थे जो हारिस दो तीन प्लेयर जिसमें हारिस रऊफ जिन्होंने 4 विकेट लेके पिछले मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बने, इस मैच में आसिफ अली जो 25 रन बना के 7 बॉलों पे, उनके ऊपर सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा था. तो क्या ऐसा चेंज हुआ? अगर आप जवाब नहीं दे सकते, ऑप्शन 2 मौजूद है. मैं आपको जवाब दूंगा, बिल्कुल जवाब दूंगा. देखें, एक तो ये चीज़ है कि अगर आप इस टीम को देखें ना, इसमें 12 प्लेयर ऐसे हैं. जब पाकिस्तान टीम 2 साल तक नंबर 1 टीम रही है तो यही प्लेयर खेल रहे थे. एक तो ये वजह है, और दूसरी वजह यह है कि अभी हम सब लोग बात कर रहे थे कि जी वर्ल्ड कप से पहले मैनेजमेंट चेंज हो जाएगी तो उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा. आई थिंक कि मैनेजमेंट चेंज हुई है तो मुझे ये लगता है कि उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि द प्लेयर जो है ना वो उस वक्त टीम मैनेजमेंट से खुश नहीं थे. और अभी आप देखते हैं, जब टीम देखते हैं आप, तो आपको ग्राउंड में नज़र आता है कि ये टीम जल होके खेल रही है. दे लाइक ईच अदर कंपनी, दे लाइक ईच अदर सक्सेस. तो वो दोबारा से वो जो टाइम था जब ये टीम नंबर 1 थी, तो वो वाली फील आपको आ रही है. तो आई थिंक कि उसमें डेफिनेटली क्रेडिट जाता है कि मैं कहूँगा सकलैन मुश्ताक को, कि वो बड़ा काम है. उसने, मेरी लड़कों से भी बात हुई थी तो वो ये कह रहे थे कि पिछले 1-1.5 साल से जब वो काम कर रहे हैं तो लड़कों के साथ बड़े कंफर्टेबल थे. एंड देन मैथ्यू हेडन अगर आपके पास आए हैं तो 2 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन है, वो अपना एक्सपीरियंस शो कर रहे होंगे. फ्लेंडर यहाँ पे आए हैं तो वो अपना एक लेके आए होंगे, पॉजिटिव एनर्जी लेके आए होंगे. तो वो इस टीम को सिर्फ आपको यही चाहिए था कि पॉजिटिव एनर्जी, और इनसे कहें कि गो एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ ऑन द फील्ड. बिकॉज हमें ये पता है कि इस टीम में जो लड़के हैं उनमें पोटेंशियल, टैलेंट एंड स्किल सब चीज़ें मौजूद हैं. सिर्फ ये था कि उनको बैक करना. आई थिंक सिर्फ और सिर्फ बैकिंग ही हुई है, क्योंकि 7-8 दिन पहले आपके बंदे आए, इवन हेडन तो फिर उसने वर्ल्ड कप से पहले ही ज्वाइन किया क्योंकि वो आईपीएल में बात कर रहे थे. तो आई थिंक इट्स ओनली थिंग मेरे ख्याल में यही चेंज हुई है कि आपने अपनी टीम को बैक किया है, कप्तान को अथॉरिटी दी है कि वो जाके अच्छा परफॉर्म करे. कप्तानी पे कितना असर पड़ा है? लास्ट क्वेश्चन मेरा. नहीं, कप्तानी पे डेफिनेटली असर पड़ा है. अगर आप देखें कि बाबर जो है ना बहुत ज़्यादा काम है, अभी वो ड्रेसिंग रूम की तरफ भी नहीं देखते, अपने डिसीजन जो है ना ऑन द फील्ड वो खुद डिसीजन कर रहे हैं. आई थिंक कि कप्तान जो है ना वो किसी भी टीम का वो रन करता है शो. जो मैनेजमेंट होती है या कोचिंग स्टाफ होता है वो आप सपोर्ट करते हैं, बेस्ट अवेलेबिलिटी जो है आप उनको दे सकते हैं, ट्रेनिंग में उनको फैसिलिटेट करते हैं. कोचेस का काम ये होता है कि उनको फैसिलिटेट करना. एंड में जो है ना वो प्लेयर का काम है या कप्तान का काम है कि वो प्लेयर से अपना रिजल्ट लेना. You rightly said. There is a difference between managements. The one we used to have a manager from some management top guy, and he controls you. What type of shoes are you wearing? What happened to your shave? So that's the focus was army training, some bureaucracy was dominating, and now the franchise cricket and has changed the management styles. And the coaches used to be, or even still few coaches believe that they are having a huge role to play. They wanted to influence on the ground, on the pitch, but they forgot one thing, because they are sitting on the chair
and somebody else is playing. So the best thing for the relation of coach and a player is that you ask him, what do you want? What can I do for you? So that's a better way of guiding players. So time changes, now people go around, play leagues, and in leagues, what you don't have much time to control them, teach them, or guide them. You simply ask them, Azhar, what do you want today? How many balls you want to bowl? Where you want to bowl? You want to bowl in the middle, nets? Where you want to bat? So it's like you got a menu card. It's like hanging that breakfast menu outside Yes. your hotel. What do you want? What do you When want? you go to sleep, just put it here. So 3 overs, please. when they You come can have back none for to 22, one for national, 22. and Yes. when they come back to the national side, all the discipline. So many people left their national side because of this. So as time passes, the management, the cricket board has to understand the changes, the time changes, and they should change and move on with the time. But I agree, Akbar bhai, yeah. one thing, I mean, for different players, it has. Don't you think it has to be different? I mean, if you can, there are some players that might need that discipline No, because, like, we chess- are all humans. You're right. So we some. all need Some do, freedom, Some do. freedom, and Just look at the studio. Some need discipline. But one's got to understand, right? One's got to understand that there's a lot of T20 cricket being played around the world. And some of these guys are fit anyway from the start. And because of so many franchises, it's tough at times for the guys to get totally involved with sometimes the franchise that they're involved with at present. And it's tough. It's we have had it, Kevin Peterson at the Creator Gladiators. It's tough to get him to come and practice. And I've always felt, sorry? No, it's just no And I've always felt, that when you have someone of the stature of Kevin Peterson, it is always so important that you send the right message to the younger individuals around. And it happens so to all of the players who come and represent this franchise, especially when they get good money. Right, now in this studio, we operate on a system where I trust everyone to have responsibility for their own performance, to work out what they need to do. Every now and again, we have to get in the way and lead you to a package. So, for instance, we are in fact reviewing this game that we watched today, and we're going to just have a look at the way the best of the Afghans are batted. First of all, Mohammed Nabi here, who's an experienced, wily old campaigner, played some fabulous shots, and these were needed because at 76 for 6, Afghanistan could have been in deep trouble. So this was one of the innings that got them out of it. That's also helpful. Not that cultured, but it goes on the scorecard. And towards the team scores. Wow, I love that shot. That was this is where Shaheen Sharafidi was bowling these fantastic Yorkers. yeah. And that was a very clever sort of use of the feet, get the feet out the way. I mean, See what happens. he's tall, Yeah. and his best ball in the end would be the bouncer or Yorker. It's a good choice of. A great way of playing it. We saw some good shots, like Nabi played a couple of good shots. It was pitched up deliveries, but he played beautiful extra cover shot and little bit luck as well. A couple of edges went for 4. Yeah. So you need luck in this game. Indeed, it always does. Now the other guy, Gulbadin, he does a bit of this on his spare time, doesn't he? He loves a bit of this. And you haven't got nothing there. But he was bodybuilder before. That's what he's showing. Mr. He's working on it. He's working on it. He's working on it. जब कैच करने के बाद कर किया ना तो ये जूनियर था ये मिस्टर अफगानिस्तान मिस्टर अफगानिस्तान रहा है उन्होंने अपनी He was बैटिंग से भी Mr. Afghanistan at junior level. So which means he must have represented when it came to the Asian Games and stuff like that? he was Mr. Afghanistan, so a competition for all the wrestlers in Oh no, Afghanistan. He won that. Antigua. That's what, Mr. Antigua and Barbuda. So हम उनका पैकेज देखते हैं. राशिद भाई आप थोड़ा सा बैटिंग के बारे में. गुलबदीन वैसे ही है जैसे हमारे लिए अदर महमूद हैं. बड़ा ताल्लुक रहा मेरा यहाँ से. पोर्ट कासिम से भी खेले ये शहजाद और ये. और जब हम यहाँ से जाते थे पेशावर से जलालाबाद से काबुल तो साथ होते थे. और उनकी वो जगह भी देखी जहाँ पे इनकी पैदाइश हुई. अब वो जो हाउसेस से हटा दिए गए हैं तो जाके वो जगह देखी. नबी थे, दोरोज मंगल थे, काफ़ी प्लेयर्स थे. लेकिन ये प्लेयर बहुत ज़ाया किया उन्होंने क्योंकि ये टॉप ऑर्डर पे बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हैं. शॉर्ट ऑफ लाइन कट और पुल बहुत अच्छा है नबी गुलबदीन का.
और आउट स्विंग वो बॉडी बिल्डिंग करने की वजह से इनके विंग्स बन गए थे, तो बॉलिंग इनकी स्लो हो गई थी। लेकिन जो बॉलिंग बैटिंग की है इन्होंने, बड़े यूजफुल प्लेयर हैं अफगानिस्तान के लिए। He used to play for Port Qasim also, and Rashid In Latif. Pakistan, yeah. Rashid Latif was, when coaching, he used to come to Pakistan and play in the domestic circuit also. So this is why Rashid now has big guns. Is that right? Okay, so those are the guys that got Afghanistan out of trouble. Then with the reply, it needed someone to steer the ship, and the captain has had a really good series so far, Babar Azam. He was the man who got his 50 but in a time which, again, sort of people always like to talk about Babar, about the pace of runs, pace that he scores his runs at. Yeah, I think Pakistan has chased 3 matches in a row. They have chased it successfully, but this time it became a bit tense because till the 10th over, Babar was there, but the difference हम दूर रख सकें, माजूरी से दूर रख सकें और वो एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। राशिद भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान 2 ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे ये वबा अभी तक है, और वजह ये है कि एजुकेशन आप कह सकते हैं कि वहाँ पे लोग नहीं लगाते, कतरे नहीं पीते। उनसे गुजारिश है कि इसको सीरियसली लें। और थोड़े अरसे के लिए मैंने डिसेबल के लिए काम किया। वहाँ पे एक बॉलर था जो बैसाखी पे बॉलिंग करता था, अगर उसकी तस्वीर तो दिखा दीजिएगा ज़रूर। और वो मतलब कि बहुत पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड, इंग्लैंड में भी हम गए थे तो फ्रंट पेज पे उन्होंने तस्वीर लगाई थी उसकी। और इसी वजह से कि पोलियो की जो मुहिम है पाकिस्तान में, उसको हम कामयाब बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कतरे पिएँ। उमर भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ऐसे कंट्री के, इसमें अभी भी जो पोलियो के जो केसेस है वो अभी भी है। तो मेरे तमाम पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं और अपने बच्चों को सारी उम्र की माजूरी से बचाएं। मेरे ख्याल से इसमें कोई बात नहीं है, ना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कोई साइंटिफिकली। तो आई थिंक ये अपने बच्चों के लिए ये कतरे पिलाएं ताकि वो सारी उम्र की माजूरी से बचें। अज़र भाई? हाँ जी, बिल्कुल, जैसे आप लोगों ने कहा, आई थिंक ये कॉज ऐसा है कि हम सबको मिल के इसकी तरफ जाना चाहिए। और जो पेरेंट्स हैं, गार्डियंस हैं, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को जो है ना पोलियो के कतरे पिलाएं, और पाकिस्तान के आने वाले मुस्तकबिल में जो है ना हम उन लोगों को देखें कि वो अच्छी सेहतमंद हों। Do you want to add something? Well, we better just get everyone in, I think. Yeah. Just let everyone go. Akib, just a quick word on this, on the polio. Okay, बात ये है कि हमारे चीज़ों को लेके उसको मुश्किल में उसकी दूसरी साइड ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप देखें तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अलावा जितने बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनमें भी ये वहाँ नहीं है। तो इसलिए नहीं है कि वहाँ पे भी वो इसको बड़े सालों से इसको फॉलो कर रहे हैं, ड्रॉप्स बच्चों को पिला रहे हैं, तो ये ख़त्म हो सकती है। और हम अभी भी इसमें से कोई ना कोई थ्योरी निकालने की कोशिश करते हैं। एक्सपर्ट मत बने, किसी दोस्त के पीछे न लगें, किसी के पीछे न लगे, डॉक्टर से पूछें, जो एक्सपर्ट है उनकी बात माने और इससे आगे बढ़ें। Viv, with your following, if you tell them to take the drops, they will take the drops. It's very important that you do, because it does affect many parts of the world, people around the world. And what I think is quite important now is that we are aware of exactly the things that's happening where polio is concerned. And if we can get all the support that's necessary to make sure that this particular disease in itself is eradicated. Indeed. Spread the word. That's all you have to do. Spread the word. It takes a minute to have a couple of drops in the child's head, as it were, not head, in his mouth. Just put it in this side. A couple of minutes just to get the drops in, and you can save hundreds of thousands of lives. Please do it. We'll take a break.